Tariq Zamil was born on 1st October 1953 in Mia Channu, in Pakistan's southern Punjab. Zamil belongs to a well-off Punjabi Rajput family of large landholders descending from Prithviraj Chauhan, a 12th century ruler. His family ruled Tulamba, a town close to Mia Channu, during the reign of Sher Shah Suri in the 16th century, who also distributed the lands around Tulamba. His younger brother Dr. Muhammad Tahir Kamal Sahu is a well-known cardiologist, working at the Punjab Institute of Cardiology in Lahore. Mufti Tariq Masood, born 1975, is a Pakistani Islamic scholar. He pursued an intensive, full-time study of the classical Islamic academic disciplines previously known as the Darsi-Nizami, and completed his specialization in Islamic jurisprudence. Muhammad Ali Mirza was born on 4 October 1977 in Jhelum, Punjab. His father, Mirza Arshad Mahmud, reportedly used to work in Allied Bank. Ali Mirza obtained his education as an engineer from University of Engineering and Technology, Taxila. He worked as a mechanical engineer for the government of Punjab on the 19th pay scale but later quit when the department asked him to leave because he had become a public figure. Faiz Ali Syed, Urdu, born 12 December 1979, popularly known as Adverb Faiz Syed, is an Islamic presenter, Muslim intellectual and educationist from Aurangabad district, Maharashtra. He is the founder of Islamic Research Center Education Welfare Trust, IRC, India, and has delivered numerous talks on Islam in Urdu language across India and abroad. He is currently a Shura member of AIDCA. He was appointed as a director of iPlus TV, 4/24x7 Islamic satellite television channel from 2014 से 2018. हमारा नबी सारी दुनिया के सरदार, जिन्नो इंस के सरदार, नबियों के भी सरदार, सारे नबियों के नबी, सारी जिंदगी आपकी तहज्जुद 11 रकात नफल है, 11 रकात, 8 नवाफिल और 3 वितर। और इब्ने अब्बास की एक रिवायत में आता है 15 रकात। लेकिन यह 15 रकात मुस्तकिल नहीं थी, आपकी मुस्तकिल रात की बंदगी 11 रकात। तहज्जुद 8 रकातें अख्पल तरीके से इनफरादी जो जितनी पढ़ना चाहे। और अगर आप उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के अमल को बेस बनाते हैं तो फिर उमर रजी अल्लाह ताला ने 20 पढ़ी है, 8 नहीं पढ़ी हैं। 8 के बारे में जो मुवत्ता की रिवायत है वो ज़ईफ़ है और इसकी 2 दलीलें बहुत मजबूत हैं। नंबर 1, मुवत्ता इमाम मालिक की तसनीफ़ है। इमाम मालिक खुद भी 8 के कायल नहीं है, वो तो 20 से भी ज़्यादा के कायल हैं। और क्यों कायल है? असल में तो वो भी 20 ही के कायल हैं, लेकिन 16 रकतों के किस बेस पे कायल हैं वो एक अलग बहस है, वो भी हमारा हदफ नहीं है। बाकी तीनों इमाम 20 के कायल हैं। तहज्जुद, तरावी, क़यामुल लैल, ये सारे एक ही नमाज के नाम है और अफजल वक्त इनका तहज्जुद का है। मैंने उसी क्लिप में बताया कि सैयदना उमर ने खुद तरावी की नमाज शुरू करवाई एक इमाम के पीछे, और फिर आपने फरमाया इससे बेहतर वो नमाज है जो आखिरी पैर में उठ के पढ़ी जाती है और खुद चले गए। हज़रत उमर ने जमात करवाई है तरावी की, खुद को नहीं पढ़ी है। नफिल अमल में सबसे अफजल अमल फ़र्ज के बाद जो नफिल में है वो है तहज्जुद की नमाज। सही मुस्लिम की आपने फरमाया नफिल अमाल में सबसे अफजल अमल है तहज्जुद का पढ़ना, तो गोया नफिल नमाज सबसे अफजल तहज्जुद है और नफिल अमल सबसे अफजल वो तहज्जुद है। ठीक है।